verses in Gita? 18 chapters. Total number of verses? 700. Chapter 1. What is chapter 1? Anyone remembers? In general, नाम याद हो जाए नहीं हो. Arjun Vishad. Good. Arjun Vishad, Arjun's dilemma. So chapter 1 is all about dilemma. So that's 18 verses. 47 verses. So 47, it's our 47 से याद रख सकते हैं. और what happens in chapter 1? What happens in chapter 1? Anyone remember? अर्जुन अपने dilemma की बात हो गया. Correct. उससे पहले क्या होता है? Dilemma से पहले. धृतराष्ट्र संजय. Correct. और क्या होता है? दुर्योधन कुछ करता है. शंख बजते हैं. शंख से पहले क्या होता है? दुर्योधन कुछ करता है. द्रोण के पास जाता है, भीष्म के पास नहीं जाता है. So yeah, so and B.R. Chopra one का जो महाभारत उसमें भी बड़ा सही दिखाया है कि सेम first chapter actually they have followed verse by verse. If you see the B.R. Chopra one as well, so you will see Duryodhan is like getting down अपने रथ से उतर के जाता है द्रोणाचार्य के पास, and then he talks to Dronacharya and basically principal warriors on both sides. Duryodhan evaluates who is fighting on his side and he also evaluates who is fighting on the other side, and he comes to the conclusion that we are stronger, so undoubtedly we are going to win this war. So that happens. Slok 1 to 11. Slok 12 to 19, as someone says, like blowing of punches on both sides. It's like अब जो है start होने वाला है, the war is about to start. 20 to 27, as I think you mentioned, Arjun start observing कि warriors हैं दोनों side पे, and after observing he starts having doubts, he starts having the dilemma that this is not right and I'm not sure if I can fight this war. So these are the four main parts in chapter 1, the way I try to remember it. One of the main books that I follow by Gita Press also has the same, so I just follow from there. And then we move to chapter 2, like he shares, and throughout chapter 1, what does Krishna say? Nothing. Krishna is just listening. So he's letting Arjun speak, जो भी हो रहा है, and that continues in chapter 2. What is the name of chapter 2? Sankhya. So Sankhya means Sankhya is numbers. And also in here it means knowledge. So it's the yoga of knowledge, Sankhya Yoga. Total 72 verses. What happens in chapter 2, and this is a recap because we went through this last time. So it has 5 main parts, chapter 2. And chapter 2 is where the actual Gita knowledge begins. Slok 1 to 10 is continuation of chapter 1 more or less. Is Arjun and Krishna is still discussing his dilemma. Slok 11 onwards is when Krishna starts speaking and starts the real Gita knowledge begins. And we also refer it like 1.11, 2.11, so this is like 2.11. You will see many books like them just refer 2.11. So that's Sankhya Yoga, the yoga of knowledge described. When Krishna starts, what exactly does he describe in Slok 11 to 30? This is about the Atma, like Atma, the soul. Soul cannot be destroyed, it cannot be burned, like all those concepts about, and the concept of Punarjan, which is very specific to Hinduism. The concept of Punarjan doesn't exist in many other religions, most of the other religions, but that's where Krishna starts, because Arjun's doubt was about, I will kill Bhishma, I will kill Dronacharya. He said, no, you are not going to kill anyone. They are already, they are going to be there forever because, there is the concept of your Atma never dies, soul never dies. So that's explained, Slok 11 to 30. After describing that,
he moves to describing dharma. That it is your duty to engage. You are a kshatriya, so you're a warrior. You cannot just run away from this war. So it's your duty to engage in this fight. And then karma. Like apart from duty, it is you need to do your karma, you need to do your work without worrying about the result. So that's 39 to 43. This also has got 2.47, shlok number 47. Does anyone remember what is 2.47? कर्मण्य जो बच्चे नहीं आते हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं. So yeah, 2.47 is the one of the most popular slok, and this is like do your work, don't care about the result. But this is the context. He's trying to starting the Gita knowledge, and then at that 2.47 he mentioned that you should do your work, don't worry about the result. The result is not in your hand. You just focus on the actual karma. And after describing this is the part that we covered in the last session, and today we will cover 54 to 72, which is mark of the main of stable mind. Or like concept of keeping the mind stable. Sankhya Yoga, there was one more concept of apart from the soul, everything is cyclic. Seasons are cycling. So happiness, sad is cyclic. After every time you're happy, there will be sadness. Every time you're sad, there will be happiness after that. So that's the concept he mentioned in 11 to 30. And one of the reasons I thought to recap is in Gita, when you start going in sequence, every concept builds on the previous concept. So once you have read Gita a bunch of times, then you can jump to any chapter. It doesn't really matter. But once you're reading for the first time, you are building from every knowledge, from like knowledge one to knowledge two. अजय तो अभी भी कवर नहीं है. कम से कम चल रहा तो मैं तो पहुंच जाऊँ. So we will build on all these concepts. कि जो सांख्य योग में पढ़ा था कि everything is cyclic, happiness के बाद sad, sad के बाद happiness, and we will start from 54 to 72 mark of the man of the stable mind. Stable mind के concept पे आते हैं. आपकी एंट्री बिल्कुल सही टाइम पे हुई है. So just this GPS that when I follow, chapter 2 or chapter 18 जो है वो longest chapters हैं. By the way, anyone is reading, listening Gita? Last couple of chapters. सही है. आप कहाँ तक पहुँचे अभी तक? Chapter 2. आप third पे हो. आप मेरा तो 15 हो गए. Actually, I restarted chapter. सही But है. I couldn't able to. Like even I like keep reading and listening as well multiple times. Chapter 3, I restarted chapter 3. Yeah. So I started reading. I just got this new book from India, so that's why. सही है. और कोई? So yeah, so once you are going through it, this might help you. Like वो तो पहली चीज मैं कोई बुक उठाता हूँ तो कितनी मोटी बुक है, क्या पढ़ना है. So this gives me some sense कि यार chapter 2 थोड़ा बड़ा chapter, it will take me time. Once it is done, and most of the concepts are introduced here, and we are going to dive deep, expand those concepts over here. So that's how it is structured. And then again, chapter 18 is summary, so we will come to that. Okay, so going to 54 to 72, marks of the man's stable mind, and is going to describe it. So quick question. I'll start with the kids. Imagine you are playing a board game and you lose that game. What should you do? Let's flip the board. I will flip the board. Second is congratulate Just like the- my brother, whenever he used to. My mom would have done the same thing. Carol ने ऐसे वो I- हो गया game को. I will support That's Anya. nice. That's how we should do Anya. And option 2 is you congratulate the winning side. You also tell yourself, I will do better next time. So yeah, Could we be a all- third option. As it's just a game. just a game. Yeah, so basically option 2. So yeah, we all are gonna flip the board. But this is like one thing you will see in every sport.
you will see once the game finishes, you know, the losing side is gonna congratulate the winning side. So Gita ke most of the concepts are common sense concepts. There's nothing new when you start reading and realizing it. It's just reinforcing those. So that's where at least I connected Sthit Pragya. You will hear this word again and again in this particular section of Gita, Sthit Pragya, Sthit Pragya. So first time I read it, what is this Sthit Pragya, Sthit Pragya, I get you. And that's the question even Arjun asks in shlok number 54 when this section starts. It's Sthit Pragasya ka bhasha samadhisthasya keshav Sthit bhi kim prabhashe imasit brajit kim. Krishna, what are the characteristics of a God-realized soul, stable of mind and established in samadhi? How does the man of stable mind speak? How does he sit? How does he walk? So, sthit pragya akhir ye hota kya hai? So, if you break this word, sthit pragya, sthit is steady, stable, firmly established. Sthit pragya is wisdom, intellect, higher knowledge. So, if you have stable mind, stable wisdom, so that's Sthit Pragya, which is basically, and you will see over in this section, it's same concept that we read around soul, that no matter whether there is happiness or there is sadness, you know, going through good times, bad times, try to keep a stable mind. So that's Sthit Pragya. So just going through these slokas, meanings. So Arjun said, that we just covered, so I'll just skip this. So Arjun asked this question, and we will see this, by the way, throughout the rest of the Gita. Now that Krishna is speaking, most of the times Krishna is going to be doing most of the talking. That's in red color. And Arjun will just keep asking clarifying questions throughout this. So Arjun asked this question that, hey, you have explained all of this concept of around dharma, around karma and around soul. We also mentioned about keeping the seal stable. So what does it mean? So Shri Bhagavan said, Arjun, when one thoroughly casts off all the cravings of the mind and is satisfied in the self through the joy of the self, he is then called stable mind. The sage whose mind remains unperturbed amid sorrows, whose thirst for pleasures has altogether disappeared and who is free from passion, fear and anger is called stable of mind. He who is unattached to everything and meeting with good and evil, neither rejoices nor requires, his mind is stable. When like a tortoise that draws on its limbs from all directions, he withdraws all his senses from the sense objects, his mind becomes steady. Sense objects turn away from him, who does not enjoy them with his senses, but the taste from them persists. The relish also disappears in the case of the man's stable mind when he realizes the supreme. Turbulent by nature, the senses even of a wise man who is practicing self-control forcibly carry away his mind. Therefore, having controlled all the senses and concentrating his mind, he should sit for meditation, devoting himself heart and soul to me. So, एक तो stable mind and second योग जो हमने cover किया था, there are 4 yogs mainly cover. तो याद है कौन से वो 4 योग? भक्ति, कर्म, ज्ञान और ज्ञान योग। करेक्ट। तो हम लोगों ने ज्ञान योग कर लिया था, धर्म योग कर लिया था। अब हम basically, and that's the sequence when I go, when we grow up as a kid, we are like learning things. So it's Jnana Yoga and we're doing work Karma Yoga. And even in this chapter, at least I personally saw that, like ज्ञान की बात हो गई थी, सोल वोल के बारे में, कर्म की बात होगी. अब वो ध्यान और भक्ति के तरफ now it is touching. So it's like you need to stable, get your mind stable. And this is a, I think, covers the essence of it. Like you need to concentrate your mind, sit for sit and meditate, आप ध्यान करो, and devote your heart and soul to me. And this will go towards bhakti as well. So ध्यान योग और भक्ति योग की तरफ ये बढ़ रहा है. This is one flow chart I see, like keeping mind stable. If you have a problem, no, then don't worry. If you have a problem, yes, you do something about it. No, then don't worry. If you can do something about it, yes, then don't worry. Yes, ultimately, no matter what happens, then don't worry. So don't worry, be happy. That's your Just kids.
Always be happy. Correct. So that's the at least any comments, questions अगर लोगों ने पढ़ा है around this section of Gita 54 to 61. Every concept in Gita is so easy to say and so difficult. Like, yeah. Just like if there is a problem and when you panic, तो और आप अपने को push कर देते हो away from the solution, Correct. right? So, Yeah. but we always panic. जब भी कोई problem आती है, it's like human nature वही that we पहले panic. स्टेबल माइंड अचीव Yeah. करो, फिर ही तो सोल्यूशन की तरफ सोच पाएगा उससे। Correct. And stable mind meditation. पैनिक है मतलब अनस्टेबल माइंड है आपका। Correct. उसके हिसाब से जो स्टेबल माइंड है that is very difficult to achieve. मतलब You are aware there are of kinds of all stable the mind also. situations. It's like the smallest example is if you start panicking or if you have anxiety, then obviously you don't have a stable mind that moment. तो आप solution की तरफ सोच ही नहीं पाओगे। I mean, Well, it's, you know, there is a fire at the house. Yeah. You know, you don't panic. You know, you figure out what is the best thing to do. Keep a stable mind. So ये common sense है. At many places we do practice it, but many places, you know, लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई, then suddenly जो है दिमाग खराब हो जाता है, क्या करना है. So all of that happens. आइए. हमारे question champion। क्वेश्चन हमारे अब तो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे. ये तो solution champion है. Question champion। तभी इसमें जो स्थित प्रज्ञ जो प्रेम का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक द डिस्क्रिप्शन मेक सेंस। लेकिन इफ वी हैव टू कंसीडर एन एग्जांपल, किसको हम बनाए थे इसके जैसा होना, हु इज दैट? I would say at least in the whole when went to Mahabharata, Krishna is probably one person. फिर वो तो भगवान है, उनको तो छोड़ो। That's the आफ्टर दैट हु इज द वन? जब मैं स्कूल में था तो इट्स लाइक IIT की तैयारी करो तो कुछ B ग्रेड C ग्रेड कॉलेज में चले जाओगे, तो इफ यू ट्राई टू बी कृष्ण you will at least become 50% or 10% of Krishna. वो तो है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, one thing which stuck is one who is free from passion. और हमने एग्जांपल लिया स्पोर्ट का, Right. तो one who is free from passion will not be able to do any sport. No, actually that's not Those true. things need passion. No, you do play sport, but you don't like worry about the result. Yeah, तो Winning losing के ऊपर। Winning losing के ऊपर. And also when you lose it, then you don't like that give is up the fine. sport. But passion is something which you are 100%. वो तो जैसे बात करें अगर कर्म योग की हमने बात करी, Right. you cannot do कर्म if you are not passionate about it. Correct. Passionate does not mean that you have to always get. Correct. Passionate, I will give my 100% to do Exactly. it. Exactly. तो एक ये चीज मेरे साथ वो स्टक है। Right. We don't worry about the result actually. That's But- why but- don't be passionate about the result. Be passionate about what you will are come doing. around the fear thing. Don't worry about it. But my thought process was that okay, passion is independent of all of it. Passion does not have anger. Passion does not have fear. Passion is just your sheer willingness to do something which you love to do. Correct. Out of the way. Right. I don't care about whether it is बाहर पानी बरस रहा है, ठंड हो रही है, तबीयत खराब है, क्या है, मुझे अगर रनिंग करना अच्छा लगता है तो मैं जाऊंगा. Correct. That is my passion. Yeah. I'm not worried about that. Yeah. तो ये एक चीज क्यों, क्योंकि ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, I think these are, and again probably these are the things that person should follow. 10% दो भी कर दिया तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा. Yeah. But there is no real example who is okay, this is the person. क्योंकि महाभारत में जितने भी लोग थे वो सब इनमें at least one of these things they were No, so I think not following it. at least for me real examples are there. So many times even in work, like something crazy goes in work, and we find we left away, find a major issue in the project that was supposed to go like reinvent, and it is not going. So my mind is stable. It is fine. It is, so that is not in my control. So So the situation है ना, वो तो उस situation आप stable है, but usually in every situation am I like that? तो I may बूंद not बूंद be करके ही सागर बनेगी ना। correct. So नहीं, मैं वही छोटी समझने छोटी की कोशिश- सिचुएशंस पे अगर आप स्टेबल रहते आते तो वो बेसिकली आपकी आदत बन जाएगा फिर स्टेबल रहना। मैं उसी चीज में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगेन मैं इस डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ कि यार देखो, वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ह्यूमन, एज ए फैमिली पर्सन, एज ए फादर, चाइल्ड, एवरीथिंग. तो जैसे कहते हैं ना कि यार अगर ये सब कुछ बन गया तब तो आप तपस्वी बन गए ना. That you might be doing one thing which is right, but there are a lot of other responsibilities that you have shown you have went away from it, which is not correct. correct. Yeah. तो क्या स्थित प्रज्ञ बनना is that the right thing?
क्योंकि अगर मैं वो बन गया तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई डोंट That केयर is अबाउट one path I think that this thing is Yeah. telling you. Correct. It's like that is one of the paths that you can probably start walking on. You अपनी responsibilities को give away कर रहे हो. You are doing your responsibilities. They may not turn out in the way you are wanting them to turn out. सिर्फ पहले आपको सिखा रहा है कि results आपने कुछ किया, results may not come in your favor. Still stay calm. It's not telling you to stop your responsibility as a father, whatever. You still do all your work, but with all the passion you want to. अपना passion results में मत निकालो. Yeah, that is fine, but and again, I'm just going But to I reverse. think I understand what he's trying to say. कि अगर आप अपनी emotions नहीं दिखा रहे किसी एक situation में, like for example something happens to your kid, और These तुम are उसको key इतनी for calm everything. हो, Your passion, then your people fear, will anger, think these are key यार, oh, emotions. ये तो बड़ा ignorant person है, और like वही selfish बात है ना person कि है, आप आप आपकी think सोच about हैम्पर life. हो रही है पीपल के परसेप्शन से। हाँ, जैसे but कि- इस world में भाई उस you मोमेंट have पे it उस मोमेंट पे productive. काम रह के सोल्यूशन निकालना उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे कि मैं अगर चीख नहीं मारी कि मेरे बच्चे को चोट लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंसर्न नहीं हूँ उसके बारे में। हाँ, but इस वर्ल्ड में तुम कैसे रह सकते हो ना ऐसे? That is what- वही वो सिखा रहे हैं, यही वही मैं कह रही हूँ, वही बात ही तो दिखा रहे हैं Yeah, वो that's why कि you don't have to be मुश्किल है 100%. पर करना मुश्किल है You बस can- यही you करना can- है। मैं जिसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप भी कह रहे थे, पैशन, फियर, एंगर, these are key emotions. हाँ। So I don't think the idea is to leave these key emotions. I He think should emotions have fear. basically come He from should the have anger. heart. He should have passion. Not from the mind. Yeah. That's also a different तो ये perspective to जैसे it. यहाँ पे everybody follows traffic laws. It is not by their desire. It is because the fear which makes them follow the traffic law. अगर ये fear नहीं होगा, anybody can do whatever they want. Right? Some sense of anger is needed. I was not able to do things successfully. I am angry with myself. I will do it better next time. अगर वो anger नहीं है, so I think, and that's what I just wanted to tell you. Yeah, Like, it is not about to get away from those key elements of human thing, right? These are key feelings and sentiments. Idea is, okay, how do I bring it together to be more productive? तो तभी मैं उससे शुरू हुआ कि मैं किसको एग्जाम्पल मान के चलूँ। नहीं बट अगर आप एंगर कर रहे हो एंड देन यू आर रिग्रेटिंग इट कि यार मैं नहीं करना चाहिए था, तो फॉर दैट यू हैव टू बी स्टडी फॉर नहीं वही है जैसे अच्छा चल मैं रिजल्ट नहीं आया मेरे हिसाब से, तुम कह रहे हो कि एंगर होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। मैं शांति से बैठ के सोचूं कि ठीक है नहीं हुआ, एंगर होना नेक्स्ट टाइम आई विल चैनलाइज, बजाय एंगर में मैं 5% भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह आई बी लाइक मैं ये 5% भी उधर रिड्यूस करूं to make it So I think better next time. what you said is what I was also trying to get to. You have to be angry, but you have to channelize that anger in the right direction, not in the negative. See, anger, every feeling can be productive and destructive. Everything. Anger should not Anger come is out on actually others. little stronger Anger word. should force you to think in the right direction. सही बात है, but we should not get away from anger. हमें होना चाहिए, ये सारे human तो ये feelings तो हैं. इमोशंस है ना, अगर आपको ये भी नहीं होंगे तो फिर then हाँ फिर तो रोबोट ही Right. That's exactly what I was saying. जैसा था ना कि whose mind remains unperturbed amid sorrow, who thoughts of pleasure have all together. To control your One is free from passion. एसेंस यही है। We are not free जैसे from it. बच्चा Correct. We are not right. That is why we are in the state where we are. मेरा ये मानना है कि ये केवल एक होता है ना कि जैसे एक निर्वाणा स्टेट भी होती है जो आप कभी अचीव नहीं करते हो, लेकिन आप उसकी तरफ अगर बढ़ना शुरू करते हो तो आप कहीं तो पहुंच जाते हो। जैसा इसने कहा कि श्री कृष्ण एक आइडियल हैं, उनकी तरफ बढ़ना शुरू करोगे और उनका एक अंश भी आगे बढ़ गया तो आपका कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट हो जाएगा, राइट? सो दे आर ट्राइंग टू टीच अ मेथड ऑफ लिविंग इन विच इफ यू गो टू एनी ऑफ दीज एक्सट्रीम्स कि भाई कोई अच्छा चीज हुआ है उसके अंदर में आप बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो, राइट? या कुछ दुख भी हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे हो, उसको अगर आप बैलेंस धीरे धीरे करना शुरू करते हो और थर्ड आई लगा के अगर आप देखना शुरू करते हो कि नहीं, और उसके लिए जब प्रयत्न भी करना शुरू करते हो तो यू आर नॉट गेटिंग बायस्ड और फियर्ड बाय द लॉस और विन ऑफ इट, राइट? तो वो प्रोसेस में जैसे जैसे आप लाना शुरू करते हो आपका दिमाग जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है, राइट? बजाय बीइंग अ वेरी टर्बुलेंट माइंड
कि जैसी एक सिचुएशन आई यू आर वेरी पैनिक, राइट, एंजाइटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सो दैट रिजल्ट्स इनटू लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इनसाइड यू। उसकी वजह में अगर आप बैलेंस दोनों सिचुएशन में लाने की कोशिश करोगे so then this might result into a better stable mind, clear thought process which is unbiased towards win or loss. I think according to Vicky, there is concept of gun which will cover the sattva gun, raja gun or tamo gun. All three are within us. So sometimes we will be, and that's where you can differentiate. Sattva gun is like very like stable, balanced. Raja gun, I want to do something, achieve something. Tamo gun is like little bit negative, it's like anger and everything, and all three are like within us. So ultimately, if you are on part of Tamo gun, as per the philosophy over here from Krishna, like your soul you'll be stuck here forever, and the body you are getting is probably getting worse, like you're getting into animals and insects, like that's the philosophy over here. If you're in Rajagun, you'll be like what we are doing. We are in Rajagun for the most part. If you're in Sattvagun, then you are going towards God. You are going towards moksha. So if your goal you have to figure out what is the goal in life. If the goal in life is in moksha, which is for most of us, I don't think the goal is moksha. Then Sattvagun becomes like much more important. Or then balancing yourself becomes much more important. Our goal is to like earn, get better in life, like mostly Rajagun. So for that, we will have anger a little bit, we will have passion. But this philosophy is basically if you're trying to go towards moksha, then this is what you should. I think my understanding so far, hearing chapter 1, not reading, and whatever I've done in chapter 2 so far. Remember, we have all had very long discussion around, okay, why Arjun is so confused, right? So, and I'll come to that. From this one, I think they are not saying get yourself free from passion, anger, or fear. What has been said is, you know what your objective is. Your objective should be clear. If any of these things are moving you away from reaching your objective, then get yourself free from it. That whenever in any situation, make sure that whatever you are doing, is that helping you to move towards your objective or away from your objective? And I think that's why I said like these all concepts are building Right. on top of each other. So that's why धर्म और कर्म को पहले बताया, उसके बाद उन्होंने Right. इंट्रोड्यूस किया कि आपको अपना धर्म तो पता ही होना चाहिए कि this is my dharma, this is the karma I need to do, and then how to do this. Then you need to have a stable mind. Without a stable mind, it's difficult to do your dharma and karma. The reference which I was taking of Arjuna, like for example, if I compare Duryodhan and Arjun, Duryodhan was absolutely clear what he had to do. He had no doubt in his mind. Yeah. Good, ugly, bad, whatever was his vision, he was absolutely clear about it throughout his life. Like Arjun, he was not even clear, why am I in this world, what I have to do? He was, and that's what I think, Chris started doing, started reminding him what is your objective, right? Don't worry about soul, don't worry about people. You are जैसे कहा कि आप तो क्षत्रिय हो, Correct. your motive is to fight. Correct. And then slowly building on it. So I think one key message here is we all should be clear that what is the objective that we are trying to follow. And every act that we do day to day, right? Whether talking to people or reading something, is that helping with my objective or not? If it is not, then maybe that is the best thing in the world, but it is of no use for you. I Right, think so the objective also is a clarity of objective, yes. I think वही तो clarity मान of कि बुरे objective is बंदे के very पास valuable. ऑब्जेक्टिव क्लियर था और अच्छे बंदे के पास And नहीं see, था। that's why this is coming after dharma. Your dharma needs to be. between the और choice good person को of- सारथी की जरूरत पड़ी जिसको कि उसको ऑब्जेक्टिव याद दिलाना So clarity of objective, I think, with anybody is very, very important. Correct. Good discussion, but let me keep jumping. Close 61. आईफोन क्यों है यहाँ पे? हाँ, वही मैं सैमसंग में डालने वाला था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसके स्लाइड में सैमसंग दिखाने का। सैमसंग है, don't worry. वही नहीं है, फोटो एप्पल की दिखी मुझे। एप्पल। So I was trying to figure out example, but मुझे मिला नहीं जल्दी में, so I just put you this. So imagine you own an older version of a phone, or आपको तो ये Samsung में डाल दिया है. Just release newer version, or it could be anything like a house, car, or job. So you should run and buy it. You should evaluate if you truly need it.
Run and buy. Run and buy it. Run and buy it. We all should do that. Tesla Model Y. Tesla Run Model and Y. buy. Exactly. Evaluate it. Yes. So that's the desire is basically the concepts that gets covered 61 to 72. जब भी मैंने कहीं से छापा है कोई साइड में कि there are many desires, you know, job का चाहिए, पैसा, घर, romance, like so many desires are there in the life, and that's there is a marshmallow experiment. I don't know how many people have gone through. Yes. Yeah, go ahead. But to like, sorry, you said that you're old enough to get a phone. So, like, what I think that means is that you need it. So I guess that's the right option to choose, just to go run and buy it. Yeah, I mean, if you need it, then you should buy it. No, because it said like you're old enough to get it. You know, like, and when you get older, you're gonna start needing a phone because you need to contact No, your it said parents. if you have an old phone. So you don't have old phones, so sorry. Go Maybe with that's the older version of phone. Version of a So you have Imagine like- you own older Oh, version. okay. If you don't have बच्चे phone, अपनी then सांस सुनने में लाइन बना दी है। मैं वही कहूँ, ये लाइन हमने तो पढ़ी है, लेकिन मैं सो रही हूँ क्यों यहाँ? if you don't have phone, then this question is not for you. If you have iPhone 10 or something, and right now it's iPhone 17, so then I know people who have 6. yeah. So, okay, so this when I was thinking about this particular, there is a marshmallow experiment I read in some of the books. I don't know, have anybody heard about this experiment? So this was okay, you have heard, right? Very interesting experiment. It was done where bunch of kids. So a kid was left in a room with single marshmallow and for about 15 minutes and then returned. And the condition was if they don't eat that marshmallow, the reward was either another marshmallow or puzzle stick depending on child's preference. So that was if you don't eat it, you're gonna get another one and the people will leave the room. The kid is left, and I think there's a video on YouTube. And there were few kids who controlled themselves for 15 minutes. Then the instructor came back and gave another marshmallow or puzzle. Few kids who did not control themselves because marshmallow is in front of them, they decided to eat it. So that's the desire part kind of I was trying to relate. Later they followed those kids throughout their career and they found the kids who controlled themselves had like better SAT scores, overall success. It's like they were able to control them. So that's the interesting experiment. It's in Stanford that was done. That is about desire, is to control your desire. So when I was thinking, I remembered this particular experiment. लेकिन इसका तो एग्जांपल ऐसे इंडियन हमारे वे वर्किंग है अगर इंसान जिंदगी भर जोड़ता ही रह गया कसम से खाई and नहीं did पाया। not enjoy it. So like and I was of the opinion Yeah. ठीक है यार at least in my lifetime I have enjoyed one marshmallow rather than accumulating 100 in my lifetime. Correct. I mean, see, there is saving too much, and I have covered saving as well later. It's like needs versus want. Financial angle जो आप बोल रहे हो, कि there is needs, there is wants. So you do want to spend little bit on your want side. The needs पे तो we all are spending, like घर का mortgage हो गया, bill हो गया, those are needs when you're doing financial planning, your general planning. Wants is going to vacation, you know, buying luxury stuff. You do want to spend something. It's not like you want to do zero, but there is little bit of balance. Like if you over it, do it right now, then future self would be. So curbing your desire has its benefits, and that's what at least my interpretation of these particular. So let's read through it quickly. So and this is continuation of the same section. He explained in the last part about stable mind, and from stable mind now he is going to desire. The first line, Yeah. First line is That what we defines have what to we're talk about. talking about. Yeah, for he whose senses are under his mind is known to have stable mind. The mind dwelling on sense object develops attachment for them. From attachment springs up desire, and from desire ensues anger. So अभी anger की बात हो रही थी, तो exactly he is like giving you a connection. See, this is what will happen. Like you will have desire for something, you will have attachment for something. From attachment, you will have desire for that, and then from desire, you will have anger. From anger arises delusion. From delusion, confusion of memory. From confusion of memory, loss of reason. And from loss of reason, one goes to complete ruin. Yeah. So that's Objective, right? तो ये जो एग्जांपल्स छोटे छोटे से आते हैं ना कि
रिक्शा वाला है वो जा रहा था, जिसने राइड किया उसका पैसे से भरा हुआ शूट किया उधर। अब उसके उस टाइम पे उसके घर पे खाना नहीं है, उसको नीड है, बट उस टाइम पे टेम्पटेशन हो सकती है कि यार मैं इसको रख लेता हूँ, ये तो वैसे ही अमीर लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। दैट काइंड ऑफ टेम्पटेशन कैन बी देयर, बट दैट टाइम इफ ही कंट्रोल दैट, फाउंड द पर्सन, रिटर्न्ड इट, so that shows the strength of his Yeah. character. That's example of a stable mind. स्टेबल माइंड Stable mind कि मेरे तो दिमाग में टेम्पटेशन को लेट गो clarity किया, है। जबकि नीड, डिजायर भी नहीं, Need नीड थी। वाज सुपर स्ट्रांग Correct. फॉर दैट मनी बैग और व्हाटएवर इट वाज. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड क्योंकि हम अपने ऑफिस में लोगों को जैसे टीम्स ट्रेनिंग करना सब मौजूद होती कि व्हाट आर जिस लोग कहते हैं कि ठीक है टीम है, लेट्स डिफाइन द प्रिंसिपल्स, राइट? So principles means okay, let's define the principles so that there is no confusion within the teams and there is no fighting and all that blah blah blah. But I think the right thing to say is that we are defining our guidelines. If we are not able to decide among ourselves, we go back to the guideline and follow them, right? एंड फोकस ऑन द एंड गेम. Yeah, so I think ये जितने भी हमने सेल्फ कंट्रोल की और ऑब्जेक्टिव्स की बात, these are those guidelines. या जैसे आपने अभी अजय एग्जांपल दिया, इसमें जब इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन आया कि यार मैं रखूं या ना रखूं, a stable mind will go back to the guideline. What kind of life I want to live? The life I want to live is that when I see myself in the mirror, I should not feel ashamed of myself. Then the person said, okay, you should give it back. तो दूसरा बंदा कहेगा I don't care. So I think that reasoning and the what kind of person that you want to be, that those guidelines become very very important. वो तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, ये हर डे टू डे लाइफ में होता है, दैट इज एन एग्जांपल, राइट? कि अच्छे वी आर ऑल वेल टू डू एंड एवरीथिंग, बट गिवन अ सिचुएशन कि अगर 3 मार्शमेलो रखे हैं और 5 जने खड़े हैं, would you really run and grab the first one or you will wait कि somebody else wants, right? तो छोटी छोटी सिचुएशंस में भी मतलब कि आपका कैरेक्टर उसके अंदर में निकल के आ जाता है कि what your वही बात है ना कि मैंने कैरेक्टर ही डिफाइन कर रहा है मेरा कि मैंने अपना एंड गेम क्या किया हुआ है, कि मुझे कल को अपने आईने में शक्ल देख के क्या करना है, या मुझे अपनी भूखे मिटानी कम वॉट में चाहे जो हो जाए. आईने में शक्ल देख के तो लोग अपने आप को just shut off, right? Yeah, तो वही. वही हाँ. It gets very philosophical that way. लेकिन ये चीज देखो, जो चीज मैं जैसे यहाँ पे सुन रहा हूँ, I think lot of these things I have tried to change the way that I was doing. Like the first thing which says that he whose senses are under his control known to have a stable mind. जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि सेंसर में एक डिजायर ऑफ होता है ना कि यार जो चीज मेरी है आई कैन नॉट लेट इट गो, आई विल कीप इट. और पर्सनल एग्जांपल, आई हैव नेवर बीन इनटू बिग इनटू शेयर मार्केट, बट आई हैव ऑलवेज बीन परचेजिंग शेयर. और इंडिया में भी 10, 15, 20 साल से आई हैव नेवर सोल्ड एनी शेयर, नेवर. तो अरे नहीं यार बेच दिया तो फिर बाद में क्या होगा. But I have changed my approach in a lot of things, and from last 2 years, in fact recently, I said, okay, I have to start recycling them. So when I started recycling them, selling them, buying again, there's a very, very small profit that I made, and it looks like a negligible profit. But if I compare from last 20 years, this is the only profit I've made. Right? So rather than having a very large objective, large thing, I think it's छोटी सी चीजें जैसे how do I want to spend my day today? ये कैसे objective? किसी को follow करना या किसी को lead करना, be very clear. Right? I think these things help. I think when I'm listening this, that makes perfect sense. And like I said, like these things we already know, but reading here it reinforces. And at least what has happened to me, next time when I get to that situation, I remember this कि वहाँ ये पढ़ा था, should I do this? Even if I do wrong or do what it is not, like I am aware कि I am doing this that I am not supposed to be doing, still I am not following Gita. Like in certain situation I am just doing what I need to do in that situation. But at least I am aware. So that's where it helps. So
But the self-controlled Sathak, while enjoying the various sense objects through his senses, and yet you still enjoy all the things which are disciplined and free from likes and dislikes, attains facility of mind. With the attainment of such facility of mind, all his sorrows come to an end, and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God. From Dhyan Yoga, when you start practicing Dhyan, you start calm, then automatically, you start bhakti ki taraf, God ki taraf, then people start going. He who has not controlled his mind and senses can have no determinate intellect, nor contemplation. Without contemplation, he can have no peace. And how can there be happiness for one lacking peace of mind? And I like this particular sloka as well. As the wind carries away a boat upon the waters, even so the senses moving away among sense objects, the one to which the mind is attached takes away discrimination. Therefore, Arjun, he whose senses are completely restrained from their object is said to have a stable mind. That which is nigh to all beings in that state of divine knowledge and supreme bliss, the God realized yogi keeps awake, and that in which all beings keep awake, it's night to the seer. As the waters of different rivers enter the ocean, which thought, though full on all sides, remains undisturbed, likewise he is whom all enjoyments merge themselves without causing disturbance attains peace, not he who hankers after such enjoyment. I like this example as well कि सारी नदियाँ मिलके जाती हैं समुद्र में, but फिर भी जो है समुद्र वैसा का वैसा ही रहता है. He who has given up all desires and moves free from attachment, egoism, and thirst for enjoyment attains peace. Arjun, such is the state of the God-realized soul. Having reached this state, he overcomes delusion and established in this state, even at the last moment he attains Brahmic bliss. Thus, in the Upanishads and by the Lord, the science of Govinda, the scripture of Yoga, dialogue between Krishna and Arjun, and the second chapter entitled Sankhya of the Yoga of Knowledge, chapter 2 complete. तो वो जो श्लोक है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? कौन सा वाला? जो आपको बहुत पसंद है? पहला वाला। As the wind carries away. इंद्रियाणाम। So, एक तो इंद्रिया, बचपन से मेरी मॉम स्पेशली से इंद्रिया अपनी इंद्रिया कंट्रोल में रखता है इसमें. So, जैसे एक बोट है, पहले के टाइम पर like boat used to be like driven by wind, right? So, the wind will carry the boat wherever the wind will want it to. So that way is your mind as well. If you don't control your mind yourself, then whatever जैसी भी हवा बह रही है, whatever situation is there, your mind will go over there. So it is you who has to control your mind. And every situation that you are getting, you have to keep your mind stable. Don't let the situation determine कि I will do this. Like you get into a situation, you judge that okay, this is the right thing to do. If 100 of people are there, they are doing the wrong thing, you think this is the right thing to do, you follow your mind. So you just control your mind, keep your mind stable. And many times we have seen like everybody is doing wrong thing, you feel like this is wrong. You are the odd one out. So that's where, don't let that wind carry away the boat. Similarly, don't let the wind carry away your mind as well. So that's why I like this one. I have a similar example. चाइल्डहुड में मेरी मॉम भी मुझे ऐसे कुछ बातें बोलती थी जो मुझे बहुत ही ऑड लगता था. शी यूज टू लाइक आई वॉज वेरी क्लोज टू सम ऑफ द कजन्स बिकॉज आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली इन इंडिया. सो सम ऑफ द कजन्स इन माई फैमिली आई वॉज वेरी क्लोज टू दैम. और मेरी मम्मी हर वक्त मुझे यही बोलती थी कि इतना क्लोज मत हो, इतना क्लोज मत हो. एंड आई यूज टू बी लाइक फॉरएवर, राइट? मतलब क्या ही बोल रहे हैं ना उस पर. एंड देन ऑल्सो मतलब मैं इरिटेट शायद इसलिए भी होती थी बिकॉज जैसे मेरी दादी हमेशा ये लाइन बोलती थी कि बेटियों ने तो चले जाना, विच यूज टू इरिटेट मी इवन मोर एक्चुअली. बट वो आई गेस सेपरेट टॉपिक था जो मेरी दादी करती थी मेरे साथ. अब जब से गीता स्टार्ट किया फॉर द पास्ट 2+ years, तब से मुझे रियलाइज हुआ व्हाई माय मॉम यूज्ड टू से दैट टू मी कि जितना अटैच तू होएगी किसी भी ह्यूमन से बेसिकली, उतनी ही मुश्किल होगी उससे दूर जाने में. इवेंचुअली जैसे कुछ भी हो लाइफ में, दे मे गो समवेयर एल्स, या वो नहीं रहे, या मतलब कुछ भी हो सकता है ना. अब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि व्हाई शी सेड डोंट गेट अटैच टू प्रीटी मच एनीवन, लाइक इवन टू योर किड्स. माय किड इज हियर.
But I think now I can understand. वो She मेरे made बात faces. नहीं बट I would like to add one little thing कि एक जमाने में, क्योंकि तुम्हारी दादी ने ये बोला कि भाई लड़की हो तो तुम अटैच मत हो, बट आज के जमाने में इट इज अक्रॉस सेक्सेस. लड़के भी तो अपने घर छोड़ के आए हो. ये कौन रह रहा है अपने माता पिता के साथ इतने से? नहीं, आप पॉइंट नहीं समझते. नहीं मतलब वो उस जमाने में दादी के लिए सिर्फ लड़कियों पे एप्लीकेबल थी, आज की तारीख में वो सारे बच्चों पे एप्लीकेबल है. हाँ नहीं वो One and all. I understand. मतलब मैं इस वजह से कह रही हूँ कि एक तो जैसे मेरी मॉम ये बात मुझे बोलेंगी if I'm close to my cousin, फिर ऊपर से मेरी दादी भी ये लाइन मार देंगी ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि what is this, like सब पीछे ही पड़ गए हैं, like हमारे. ऐसा है वो टीनेज में तो हर चीज के लिए हर टाइम ही लग रहा होता है कि मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं. तुम सामान समेटने को बोलो, कमरा क्लीन करने को बोलो, नाश्ता करने को बोलो, दिल भी लाइक मेरे पीछे ही पड़ी रहती है. माँ तो पागल है बेसिकली. वो छोड़ो, वो टीनेज में एवरीथिंग हैम्पर्स, बट कम टू दिस लाइन अगेन, इट इज अक्रॉस एनीवन अब तो right now. डेफिनेटली वी सेंड वन चाइल्ड टू कॉलेज. राइट. थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, 10 दिन के लिए बच्चा आया है, वो 4 दिन के लिए आया था. वो भी थैंक्स टू आवर इवेंट एंड इवेंट बैक कि आप तो थैंक्सगिविंग कुछ करते नहीं हो, आई विल गो बैक. नहीं, मेरा पॉइंट What ये can था we कि उस वक्त मुझे ये दोनों अब मैं चीजें practice चालू combine कर रहा हूँ. लगती थी, या वो पर अब मुझे पता चला कि मेरी दादी का कॉन्सेप्ट टोटली Correct, डिफरेंट था yeah. और मेरी मॉम का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट था. मतलब आई विल स्टिक टू व्हाट माय मॉम इज सेइंग, आई वुड नॉट स्टिक टू व्हाट माय दादी वाज सेइंग. ऑब्वियसली वो तो I would stick to both of them. जनरेशनल Yeah, ट्रॉमा है वो तो. I would stick to both of their philosophy. No, I but would see, say definitely one of the thing is कि many things we learned in our childhood, teenager years did not make sense back then. That's one reason I'm including kids. Like some of these concepts do not make sense to you right now. As you grow up, as you face, once you're 25, 30, 35, then these things start making more and more sense. And the good thing is like we actually learned back then. Now we are able to use it. But Gita is not teaching you to Unaffected. detach. He's teaching you to do control. मैं बिल्कुल उसी का Not like कि आप अच्छा किसी के बारे में कुछ सोचो और किसी के लिए कुछ फील नहीं, बट अब हो ही रही है वो चीज, तो मैं कितना उसको get over show that by developing a stable mind. Right? Yeah. जब मैं एक्सी में आया तो साहिबाबाद गाजियाबाद से मैंने किया, तो वहाँ पे बुलंदशहर के एक फ्रेंड था वो था, तो उसने एक बार एक लाइन ऐसे बोली कि यार ज्यादा मीठे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, पता कि नहीं ये बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू ईच अदर. तो नो, वी शुड बी रियल टू ईच अदर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा मीठा है, सब करना हो उसमें भी कीड़े पड़ते हैं. इट शुड बी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. जहाँ पे गुस्से होना है वहाँ पे गुस्से होना चाहिए, लेकिन उतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आपने स्लीप कर दिया. But too good to So be I think a true. combination of all things, all taste and all feelings, all emotions have to be there. नहीं, बट अगर आप थोड़ा भक्ति की तरफ रहते हो तो आपको गुस्सा कम आता है. बिकॉज माई मॉम इज लाइक, मतलब हमने तो चाइल्डहुड से देखा है, मेरी मॉम बहुत भक्ति करती हैं, तो उनको इतना गुस्सा आता ही नहीं. फॉर हर इट्स लाइक शी इज ऑलवेज काम. No, exactly. That's a good point. I have seen मेरी मॉम every. कभी, मतलब उन्होंने गीता भी शायद 3-4 बार पढ़ी होगी, वो हर सीजन के हिसाब से एक बुक पढ़ती है, शिव वाली भी और वो सब भी, तो उनको गुस्सा कभी नहीं आता. मैं इसको दूसरे तरह से करता हूँ. ये ह्यूमन इमोशन है, गुस्सा सबको आता है. शी नोज हाउ टू कंट्रोल करना. शी नोज हाउ टू. ये करना गलत है, उनको आता नहीं है, उनको कंट्रोल करना आता है. She's much हमें beyond control us करना नहीं with the stable mind वाला चीज, right? इसके और भी examples हैं. वही मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रहा है कि हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशन. Yeah. अगर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उसको भी कंट्रोल करना है. मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे उसको भी कंट्रोल करना है. उसी तरह से एंगर को भी कंट्रोल करना है. Yeah. हाँ, but that everybody has their own way. कंट्रोल इज लाइक, मतलब इससे उनका मैं बता रही हूँ, वो हमेशा ही पूजा करती है सुबह शाम, तो शायद उनका रूटीन ही ऐसा है कि उनको चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती. इफ आई एम आल्सो कॉलिंग हर, शी विल से कि मेरा टाइम हो गया. अच्छा देखिए, आपको आपको जाके attached हैं. आपको जाके शांति भी ऐसे ही लोगों के पास में जाके मिलती है Correct. जो कि अपने दिमाग में शांत हैं, आपकी बात सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको And they're not संभाव एक talking That is शांत the very शांति first मिल scene रहा ना है. कि कृष्ण जी हंस रहे हैं, अर्जुन अपना सब मुस्कुरा रहे रो थे. रहे हैं कि मैं हाँ, मैं क्या हाँ, करूं, हाँ. and he is just smiling. And Ajay, what you said, to get to that state, people have to work very, very, very hard. जैसे आपकी मॉम रोज सुबह पूजा करें, ट्रेनिंग हसल एवरी डे फॉर इट, एंड एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट वे. जैसे मुझे अगर गुस्सा आता है, फॉर मी ओके, आई गेट आउट एंड गो फॉर अ रन. दैट इज माय वे ऑफ कंट्रोलिंग.
someone else starts cooking. That's their way of it. So they have to work very, very hard to keep their emotions every day. और मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि आदि का पूरा प्लान था अभी आने का, बट उसने कहा कि ये लास्ट ये है और उसमें हम तो वैसे भी थैंक्सगिविंग का कुछ करते ही हैं, पुट इट दैट वे। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उनका कुछ प्लान है, आई वांट टू गो बैक। मैंने लिया उसकी फ्लाइट टिकट चेंज करा दी। शी इज वेरी वेरी अपसेट, बट मेरा यही मानना था कि अगर उसका मन है और तुम अगर वो टिकट वो रख भी लोगी तो वो 2 दिन ही विल नॉट बी प्रेजेंट हियर, राइट? अगर उसको तुम बांध के भी रख लोगे तो भी ही विल नॉट बी प्रेजेंट हियर। सो अगर वो आ जाएगी क्लैरिटी तो मेरे दिमाग में जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं था, बट शी वाज वेरी अपसेट ऑन दैट। Then you change, not now. That day when change, but then God forget, right? मिल गया तो आपके ऑप्शन। हाँ। सेम सिचुएशन में आप दोनों का माइंडसेट अलग है। मतलब हो जाता है किसी सिचुएशन में इसका ज्यादा काम हो जाता है, किसी सिचुएशन में मेरा होता है। मेरा एक जगह मतलब तो इसी तरह से मैं कहूँ 4 योग जो बने हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है, वो इसीलिए कि देयर इज नॉट वन वे टू डू एवरीथिंग। You can be कर्म योगी throughout your life. You have never done bhakti. Yeah. It is perfectly fine. बट मुझे एक चीज जो एक या 2 चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इसमें बातें करके जो क्लैरिटी आई कि एक कि अगर आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, कभी ये मत सोचो कि तुम गौरव कृष्णा के लिए कर रहे हो, इनके लिए कर रहे हो, इनके लिए कर रहे हो। हमेशा सोचो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर वो कर दोगे तो तुम्हारी कभी गौरव कृष्णा से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए किया। आपको ये सोचना चाहिए कि गॉड हैज मेड यू केपेबल ऑफ डूइंग दिस, राइट? वैसे- सो आपको एक मीडियम बना लिया उस काम के जैसे लिए। आप ये कह रहे थे, इसमें एक मैं जरा करूँ, ऐसा करो भगवान के लिए कर। If I am doing anything for anybody else, I am not doing for the other person. Not neither for I am doing for myself. That makes me happy. So the happiness that I wanted, I already got it. Don't expect more. That's a good segue आपने जो बोला next chapter। लेकिन सर मैंने आपकी बात रोकी, आप अपना आगे एक ये था, और दूसरा चीज जब आप मानने लग जाते हो कि जब भी अभी से पूरे 1 साल का देख लो या अपनी लाइफ लॉन्ग का देख लो, जिस टाइम जो सिचुएशन आई थी जिसमें आपको लगा कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ या कुछ हुआ है, जब आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में 6 महीने बाद 1 साल बाद जब देखते हो उसी चीज को लगता है कि नहीं वो ठीक ही हुआ समाओ, या तो अपने को समझाने का होता है या तो अगर कहीं किसी तरफ ले जा रही थी जिंदगी कहीं ले जा रही थी, लेकिन आपको उस दिन नहीं पता था, राइट? समाओ इट वाज टेकिंग। तो अगर आप हर चीज को ये मानने लगो कि भाई हम यहाँ पे आए कुछ लर्न करने के लिए, हमारा 60, 70, 80 साल का जितना सफर है ये कुछ लर्न करने के लिए, तो जो भी सिचुएशन आए उसमें अगर आप ये ढूंढने लगो कि हाँ ये बुरा हुआ लेकिन क्या लर्न कर सकते हैं, मतलब अभी ये भी बहुत हार्ड चीज है, मतलब इतनी इजीली नहीं आती क्योंकि वो सिचुएशन आपको कई बार बहुत जम के हिला डालती है, राइट? अगेन सेम चीज की आदि क्या कार में वो तोड़ के और उसमें से पूरा उसका हार्ड डिस्क और पासपोर्ट और सब कुछ निकाल के ले गया। हाँ, सो अगेन पहले मतलब आई वुड हैव बीन नॉट गोइंग इनटू दैट, बट बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे आप इसमें, राइट? मैंने कहा कि तुम्हारी हार्ड डिस्क अगर चोरी हुई है, आज तुम्हारे पास बहुत कम डेटा था, कोई मेजर प्रोजेक्ट का डेटा नहीं था, इसकी लर्निंग ये है कि तुम्हारे को अब आज से बैकअप लेना है उसका, राइट? एक और बैकअप होना चाहिए, राइट? कार के अंदर में छोड़ के पब्लिक पार्किंग में जा रहे हो, अपना बैग नहीं छोड़ना है। अगर तुम ये 2 लर्निंग अपनी लाइफ में ले लोगे ना, दैट इज गुड इनफ, नथिंग हैज बीन, राइट? तो एक बार वो चीजों को उस पर्सपेक्टिव से जब आप देखना शुरू करते हो कि नहीं भाई दिस इज समथिंग व्हिच मे बी आई वाज नॉट डूइंग, इट इज पार्ट ऑफ माय लर्निंग, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बहुत कामनेस आ जाती है कि नहीं, विक्टिम एटीट्यूड नहीं होने लग जाता कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, ये हुआ। यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं इसमें क्या मैं लर्निंग देख सकता हूँ, राइट? सो दैट स्टार्ट्स कामिंग यू डाउन इन दैट सिचुएशन। और इसीलिए ना जैसे काफी सारे वन लाइनर्स दैट वी हैव हर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट? आई थिंक नाउ हाउ दे गेट लाइक when going gets tough and tough gets gets going, like irrespective of the situation, the other one, everything which glitters is not gold, right? One which is my favorite and I follow throughout my life ever since I've heard it, that things which look good from far are far from good. जो बहुत अच्छा लग रहा है
I think you need to relocate Stay from a away. different perspective. It could be उसका you बेस्ट know, एग्जांपल है सोशल मीडिया। Absolutely. मैं अपने बच्चों की दिखाती हूँ, वो जो दिख रहा है ना वो नहीं है। वो हमें जैसे लोग बोलते हैं ना इंडिया के कोई फ्रेंड्स कहेंगे हाँ भाई तुम्हारी तो लाइफ बहुत सही चल रही है, तो ये यही कहते हैं कौन सी लाइफ फेसबुक पे जो दिखाई दे रही है असली वाली, क्योंकि फेसबुक पे मैंने चूज करके अपनी अच्छी फोटो डाली है, मैं खराब वाली मुंह की फोटो डालूंगी भी नहीं वहाँ पे भाई। बचपन की सही है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नहीं फिर मेरे बच्चे की कार तोड़ दी, वो चुरा के ले गया, वाई वाला पुट इट ऑन एफबी। तो इसीलिए जैसे बच्चे भी कहते हैं जो सी तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे पार्थ अभी वो कौन सी चप्पलें ये कॉन्वर्सेशन पीछे पड़ा दोबारा हुआ कर था। सकते हैं जब ये दोनों हैं ना। चप्पल अभी यही डिस्कशन कर रहे And थे। then you get it. Right? तो वो इजी गिविंग इजी ये जो टीटी टेबल थी रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग कर देना। कि जैसे वो टीटी टेबल थी वो पिछले एक साल से पड़ा था टीटी टेबल थी। ठीक है, when you stop following up with me for टीटी टेबल then you will get it. तब उनको बच्चों को समझ में आ गया कि ठीक है, what we want let's tell that and whenever he feels it's the right time then he will give us. तो अब वो पीछे नहीं पड़ रहे, तो इसका फायदा हो सकता है कि फ्यूचर में होगा when they really want something। और तब मैंने देखा पिछले 1-2 साल से वो पीछे, उनको ये नहीं है कि मैंने कह दिया अब आएगी, अब बोल दिया that I am just अब आ भी सकती है और when नहीं भी whenever you get chance। By moving to the next topic, this is a Yes.